spread across India. I think with that brief introduction, I once again welcome all of you to today's webinar on blocking of ITC credit. And with that, I'll start the deliberations and will share my presentation here. And with us today, we have our esteemed panel of speakers as well. Shefali Girdarwal ji, who will be partnering in the deliberations, as well as Ashuji. And of course, we'll have Avinash Bhai also joining in some time, although he's traveling out of India currently. I hope my screen is visible. Yes, Avinash has joined basically. Okay, thank you, sir. So Avinash ji also is here. So the first slide is just to give you a summary on blocking of ITC under GST regime. It is important to note that we do not have any such specific provisions or any specific sections in the GST Acts which provides an empowerment to the officers of GST to block the ITC that is available for any SSEs. However, I think in 2019, by way of notification number 75 central tax, government has introduced rule 86A, which empowers the commissioner or an authorized officer to block ITC if there are reasons to believe. I think reasons to believe is an important term which we will be deliberating more on the future slides. And once he has reasons to believe that ITC has been fraudulently availed, and that how he will do is whether the ITC has been availed by way of invoices from non-existent suppliers, or where the ITC or the tax has not been paid to the government by the supplier, or the person is not conducting the business from the registered premises under which the GST registration was taken. If these circumstances are there, then he is empowered to, or the commissioner is empowered to block the ITC credit. But the moot question remains whether an action under GST regime be taken solely on the basis of a rule, because there is no specific provision or sections that empowers that. And in absence of specific empowerment by any provisions of GST, can an officer block the credit? So there has been numerous litigations around that, and some judgments are also there and some are pending. In our firm also, we have taken a lot of cases there to the High Court, and some of those are pending, which we'll be discussing in the coming slides or the discussion point. So before we get into the legal jurisprudence and all, it is important to know what is Rule 86A. So Rule 86A is basically lays down the conditions of use of amount available in electronic credit ledger, which is under what conditions the amount available in electronic credit ledger can be blocked. So first condition is the commissioner or an officer authorized by him on this behalf, and which should not be less than a rank of assistant commissioner, can only do this blockage of credit. And then he has to have the specific reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible. And that how he will have reasons to believe that the credit of input tax credit has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document which are prescribed under Rule 36 was issued by a registered person who has been found non-existent or not conducting any business from any place for which the registration has been obtained. And these availment of ITC has been availed without receipt of goods or services or both. So if there is no underlying receipt of goods or services, then also those can be blocked. And again, the next condition is if the tax has not been paid for the invoices which has been raised, which are the subject matter of claiming the ITC, has not been paid to the government. Then point number C or
point C of Rule 86 says the registered person availing the credit of input tax credit has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained. And the registered person who is availing the credit of input tax is not in possession of tax invoice or the debit note or any other document which are prescribed under Rule 36A, including the ISD invoices, etc., which is also prescribed under Rule 36A. And then the proper officer, which is commissioner or the officer below him, has reasons which he needs to be recorded in writing, which says not to allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic ledger for the discharge of any liability under Section 49 or for claim of any refund of any unutilized amount. The next condition or sub-rule 2 says that once the commissioner or the officer authorized by him under sub-rule 1 may, upon being satisfied that the condition that existed earlier for disallowing debit of electronic credit ledger is no longer exist, then he should allow such debit to happen. And the third condition is one of the important condition is that such restrictions or the blockage of ITC credit shall cease to have effect after an expiry of period of 1 year from the date of imposing such restrictions. So this is very important that once the restriction is in place, after 1 year, this restriction should be done away with, or the system should automatically allow the debit to happen once the 1 year has expired, which usually was not happening. And there were a lot many other issues were there, because of which then government came up with a guideline, and that guideline was issued by CBIC in November 2021. And I would request Shefali ji to take the guidelines going forward. तो मुझे एक बार 2 स्लाइड्स पीछे भी कर दीजिए आप एक बार, ठीक है? This one? Yes, yes, ठीक है. Yeah. So Rule 86A, first of all, it was the conditions of use of amount available in the credit ledger. Condition use की थी, but actually में provision was about blocking. तो ITC ledger को block करने का provision था, which was inserted in chapter 9, which was for the payment of tax. So यहाँ पे payment of tax की बात चल रही थी. So जब इसको introduce किया गया, what I believe the government's goal should be that if some tainted input tax credit is suddenly coming into an account, they just wanted to stop it at there, and they didn't want it to pass through the different accounts कि चेन इतनी लंबी बन जाए कि उनको फिर इसको ट्रेस करना मुश्किल हो और बहुत सारी लिटिगेशन आगे हो. तो शायद उसका जो पर्पस रहा होगा उनकी साइड से कुछ अच्छा ही रहा होगा, बट द वे इट इज यूटिलाइज्ड प्रैक्टिकली, और आई विल से मिसयूटिलाइज्ड, दैट वाज हैविंग वेरी बैड इम्पैक्ट. और इसी के लिए फिर गवर्नमेंट को बाद में इसके लिए गाइडलाइंस लेके आना पड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉर्मेशन ऑफ द होल रूल इटसेल्फ इज वेरी वीक. जो लैंग्वेज यूज किया गया है इसमें, अगर पर्पस था किसी टेंटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को सिर्फ ब्लॉक करके रखना, तो उस पर्पस में तो लैंग्वेज के बेसिस पे ही काफी जगह फेल हो जाता है. बिकॉज इफ यू विल सी, सबसे पहले देयर सेइंग द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ हैविंग रीजंस टू बिलीव, मतलब रीजन टू बिलीव का भी जो राइट है उसके लिए भी दे हैव सेड both of them, commissioner जिसको ऑथराइज कर रहा है उसको भी रीजन टू बिलीव. सो आइडियली द रीजन टू बिलीव शुड बी एट ए सीनियर अथॉरिटी ओनली, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट रीजन टू बिलीव, या जो भी हमने बोला है कि रीजन टू बिलीव पे आप ये कर सकते हैं, सिर्फ उतना हिस्सा ही जो उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ओनली दैट शुड हैव बीन अलाउड टू बी द अदर पार्टी. ऑल्दो मुझे लगता है इसको रीड ऐसे ही किया जाना चाहिए कि रीजन टू बिलीव तो अभी भी सीनियर अथॉरिटी के पास ही होना चाहिए. ओनली जो उसका एग्जीक्यूशनल पोर्शन है, ओनली दैट पार्ट दे शुड बी एबल टू pass on to the other juniors. First thing. Second thing is they're saying first part, अब इसका पढ़ोगे जो वन कंडीशन नंबर 1, आपने कोई भी ऐसे एक इनवॉइस के बेसिस पे लिया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कोई भी इनवॉइस या डेबिट नो, जो किसने इशू किया है बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट. और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉन एग्जिस्टेंट को आपने डिफाइन नहीं किया, सो इट बिकेम ए सब्जेक्टिव थिंग. So for many officers, I called someone and they failed to pick up my call. They are non-existent, right? जो उस जगह से बिजनेस नहीं कर रहे. तो पहली बात तो मेरे को इसमें जो लगता है कि नॉन एग्जिस्टेंट को डिफाइन किया जाना चाहिए था, और बाकायदा नॉट जस्ट डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन से भी बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें निकल जाती हैं, बट देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट कि किस किस केस में आपको नॉन एग्जिस्टेंट मानना है, किस किस में आप नहीं मानेंगे.
सो एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन ऐसा बहुत बार हुआ है कि पूरा स्टाफ ही अपने घर से काम कर रहा है, तो आप ऑफिस पे आओगे, यू विल फाइंड नो वन, एंड देयर आर मेनी बिजनेसेस विद ह्यूज टर्नओवर। स्टॉक उनको रखने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैंसी ऑफिस उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। So all of these things, all of the variety of the modern businesses which are emerging into a new era, they all should have been taken care at the time of drafting the provision itself. But उन्होंने उसको बहुत ही लूज लैंग्वेज में बोला, who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place. Now there is one more problem in this line also. नॉट टू बी फाउंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस। तो आज हो सकता है वो अपने बिजनेस प्लेस से कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा हो बिकॉज सेल्स नहीं आ रही है उसकी, तो समहाउ ही हैज नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, बट ही इज नॉट कंटिन्यूइंग हिज बिजनेस बिकॉज इट्स नॉट रनिंग वेल, राइट। तो अभी मैंने जो 2 साल पहले 3 साल पहले भी कोई क्रेडिट अगर लिया था, उसके साथ मैंने ट्रांजेक्शन कर ली थी, आज आपको लग रहा है कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा, तो इधर यू शुड हैव अ डायरेक्ट नेक्सस विद दैट अमाउंट कि आज उसका बिजनेस नहीं चल रहा, तो जब से बिजनेस नहीं चल रहा उसी दौरान का कोई जो इनवॉइस है, so the input tax credit related to that invoice only should have been restricted here in this particular provision. बट प्रॉब्लम क्या है कि इनवॉइस तो मतलब क्रेडिट तो उनको कभी कभी मिल जाए चेन में, ब्लॉक तो वो किसी भी क्रेडिट के लिए कर सकते हैं। तो आज के डेट में हो सकता है मेरा बिजनेस नहीं अच्छे से चल पा रहा है, तो आई विल से नॉन एग्जिस्टेंट एंड बिजनेस नहीं करना, दोनों की ही हो सकता है कि नॉन फ्रॉडलेंट रीजंस भी हो। So as I said in my opening lines, the purpose should have been to control the tainted input tax credit. But जो आपने पहली कंडीशन बनाई है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि the people who don't have any fraudulent intention वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। And if you will see the second condition, तो यहाँ पे तो हो ही रहे हैं। Now they are saying in second condition without receipt of goods or services or both. एक्चुअली कवर क्या करना चाहते थे, फेक इनवॉइसिंग, बोगस बिलिंग, कि आपने क्या किया, बिल ले लिया बट गुड्स नहीं लिया। बट द प्रॉब्लम इज अगेन टेंटेड को करना था, बट आपने प्रोविजन ऐसा बनाया कि नॉन टेंटेड भी उसमें कवर हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा ट्रांजिशन में हो गुड्स, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो वो फ्रॉडलेंट नहीं है, वो फिर सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए है, तो ये कंडीशन का ब्रीच है मेरी साइड से, आई एग्री। बट ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉडलेंट है, तो कोई टेंटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा ट्रांजिशन में और कॉर्पोरेट्स में तो ऐसे डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत होते हैं कि गुड्स कहीं और रिसीव हो रही है, इनपुट टैक्स कहीं और लिया जा रहा है हेड ऑफिस में, तो समटाइम्स देयर मे बी सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। दिस इज ऑल्सो नॉट ए फ्रॉडलेंट सिनेरियो फॉर दैट मैटर। ओके, टैक्स जिसके लिए चार्ज किया तो वो अपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ये तो 16(2) सीसी भी आता है, ठीक है, इस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं। नेक्स्ट स्लाइड एक बार प्लीज कर दीजिए। देन अभी रिसिपिएंट के पार्ट पे हो गया कि रिसिपिएंट नॉन एग्जिस्टेंट था या कोई बिजनेस नहीं कर रहा था वहां पे, तो भी जहां से उसने रजिस्ट्रेशन लिया था। सो अगेन सेम थिंग, लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनकी फॉर्मेशन चेंज हुई है, सो दे डिडंट कंसिडर ऑल ऑफ दो सिनेरियोज। ओके, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगेन वही वाली चीज, डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं भी है, अगेन हो सकता है कि जो क्रेडिटर उसका सही डॉक्यूमेंट आने में उसको डिले हो गया हो, तो आई विल से कि ये सिनेरियोस तो और जगह भी ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो स्पेसिफिकली उनको भी यहाँ पे उन्होंने कवर किया। एंड इन द इनिशियल पीरियड इसका देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया तो ठीक है इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दो। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं कई बार कि किसी को इंटरेस्ट का डिमांड किया, उसने कहा नहीं बनता है तो हम तुम्हारा लेजर ब्लॉक कर देंगे, मतलब एनी डिमांड ऑफ एनी टाइप, एंड दे विल से कि हम बस तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर देंगे। टूल बन गया इन द हैंड्स ऑफ अथॉरिटीज, जिसका जहां मन किया वहां पे उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट खुद इसकी कुछ गाइडलाइंस लेके आई जहां पे उन्होंने इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। ये सी से स्टार्ट है, ओके ठीक है। अब टर्न टू द गाइडलाइंस। अच्छा, अब इसमें इनिशियल फेज में एक प्रॉब्लम तो ये आई कि जो टाइम पीरियड है, इन द रूल इटसेल्फ द टाइम पीरियड गिवन इज 1 ईयर, एंड दे हैव आल्सो रिटन कि 1 साल से पहले अगर आपको लगता है कि उतना जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसका जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, 1 साल से पहले भी उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑफिसर ने अपने आप ऐसा डिसाइड करते हुए कि अब जो इसकी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, 1 साल से पहले किसी का भी अनब्लॉक किया हो। आई हैव नेवर सीन इवन अ सिंगल जहाँ पे उन्होंने खुद से सोच के उसको पहले अनब्लॉक किया हो। उल्टा 1 साल के बाद भी अनब्लॉक नहीं करते थे, एंड कोर्स ऑफ एक्शन मिलना उस वक्त मुश्किल हो जाता था कि किस तरीके से उसको अनब्लॉक कराएं। देन सीबीआईसी ने बोला भी कि कायदे में तो होना ही चाहिए कि पोर्टल पे ही ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने ब्लॉक किया तो 1 साल की टाइम लिमिट खत्म होकर वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाए, कि भी ऑफिसर को नहीं भी याद रहा देन इट शुड ऑटोमेटिकली बी अनब्लॉक। अच्छा, अब गाइडलाइंस में उन्होंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा है ये
मैकेनिकल मैनर में एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए, इसका केयरफुल एग्जामिनेशन आपको करना है। सो गाइडलाइन से भी पहले ना देयर आर 2-3 क्वेश्चंस। पहले तो ना मैं दोनों हमारे पैनलिस्ट इतने अच्छे बैठे हुए हैं ना, तो उनसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ना 86A क्या है? मतलब क्या ये कोई रिकवरी का मैकेनिज्म है या ये पेमेंट का मैकेनिज्म है? और लॉ के किस रूल से एक्चुअली गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी आ रही है कि वो इस वाले रूल को इश्यू करें? सो दोनों के कमेंट्स पहले अविनाश जी। पहले आशु भाई देख लीजिए। ओके आशु जी। शिवाली, यहाँ पर तुम्हारे पहला तो ये था कि रूल आवाज आपका थोड़ा इको कर रहा है। इको कर रहा है, जस्ट मिनट। अभी सही है? अभी बेटर है, बोलिए एक बार। अभी वॉल्यूम सही है? ठीक है, अभी मुझे बेसिकली यू हैव क्वेश्चंस है आशु जी आवाज नहीं आ रही है। आशु जी डिस्टरबेंस है आवाज में भी। आवाज नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस है आवाज में भी। हाँ अभी आवाज सही है? बेटर। या अभी सही है? या हाँ अब ठीक, अब ठीक है, अब ठीक। बेसिकली जो पर्पज ऑफ सेक्शन रूल 86 से था, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी। रिकवरी रूल 86A से नहीं कर सकते। डिफरेंट हाई कोर्ट के भी जजमेंट है, 73 74 की जो प्रोसीडिंग है और 86A की प्रोसीडिंग्स या जो प्रोसेस है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है और डिफरेंट पर्पजेस से है। डिपार्टमेंट को अगर कोई रिकवरी करनी है तो वो 73 74 में ही कर सकते हैं। रूल 86A के थ्रू रिकवरी पॉसिबल नहीं है। दैट इज वन पार्ट। और जो मेन पर्पस था, वो पर्पस था कि जहां पर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, उस पर्पस से अगर आईटीसी को यूज हो रहा हो तो इस को हम रोक सकें, ताकि वो जो असेसी है अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम रोक सकें। दैट वाज द पर्पस जो काउंसिल की मीटिंग्स में, और जो पर्पस था। बट पर्पस और जो इसकी ड्राफ्टिंग है, दैट हैज बीन डन इन डिफरेंट वे। जो अगर हम इसमें देखें, अगर हम सेक्शन 80 रूल 86A में जाएं तो 4 कंडीशन के अलावा फ्रॉडलेंटली है। मतलब फ्रॉडलेंटली को उन्होंने अलग डिफाइन किया है। मतलब डिफाइन नहीं किया, अगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है तो मैं अपने आईटीसी को, टैक्स पेयर के एसएससी आईटीसी को ब्लॉक कर सकता हूं। उसके बाद की 4 कंडीशन उन्होंने अलग से और लगा दी, दैट वाज अदर देन फ्रॉडलेंट। मतलब उन चारों कंडीशन में आपको फ्रॉडलेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर हम रूल 86 ए पर जाएं तो जो आईटीसी में, आईटीसी लेजर में आईटीसी अवेलेबल है, दैट इज ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्रॉडलेंटली अवेल्ड। या तो एक कंडीशन ये है, या मेरी 4 कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी हो रही है, तो वो बेसिकली बेसिकली दे कैन ब्लॉक इट। बट जो 4 स्पेसिफिक कंडीशंस उन्होंने लगाई है, दैट यू हैव आल्सो एक्सप्लेन, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट ऑलवेज फ्रॉडलेंट, इवन दे आर ब्लॉकिंग इट। सो द क्रक्स, द आंसर इज दैट कि 86A का जो पर्पस था, वो पर्पस था कि सिर्फ हम आईटीसी को यूज करने से रोक सकें। वी शुड स्टॉप द यूजेस ऑफ आईटीसी। रिकवरी कैन नॉट बी डन थ्रू इट। The second question was from where it is coming. I think there is no specific power into the GST law or the act I found where the power is coming from for Rule 86A. There is one interesting judgment of Gujarat High Court also. I think that is a Samay Alois. In this, specifically the court has discussed one part that is separate from that. We can file the appeal under Section 107. If any order or any communication we receive, the appeal can be filed under Section 107. The court has discussed there, Rule 86A order is not under the CGST Act. Just see, that is a specific discussion by the court. Any specific order under Rule 86A is not under the Act, CGST Act, so appeal cannot be filed. So what the interference I'm drawing from there,
the Rule 86A is not coming from any specific power under the Act. So even the appeal is not cannot be appeal cannot be done under Section 107 for the rule under Rule 86A. That's why they have given in the circular or the guideline, the officer should consider the submissions made by the assessee. That is the informal communication. That is not the appeal under 107. So the answer in my humble submission is there is no specific provision under the CGST law which mandates the provisions of Rule 86A. Yeah, Avinash bhai. अविनाश जी सेम क्वेश्चन आपसे भी, एक तो पावर कहाँ से आ रही है फर्स्ट थिंग, और अपील नहीं कर सकती है तो और भी खराब है फिर मेरे लिए, वहां पे भी नहीं जा सकती मैं। एंड थर्ड अगेन वही कि जब आपने ब्लॉक ही कर दिया तो क्या रिकवरी मैकेनिज्म होंगे? उसके लिए that's why the writs are being filed. See, number one, Rule 86 capital A is a valid rule. No question about that. There is no dispute now. It's a valid rule. The powers are there. Powers have been exercised by the officer. But if it is exercised within the four corners, then sub-rule 2 is already there to protect the taxpayers, which says that if your account is blocked or your credit ledger is blocked, as a provisional action, then what you can do is you can make an application to the commissioner, and that commissioner will take care of it. The commissioner will consider your applications, and considering your application, if the commissioner feels that now the debit is not required or the debit freezing is not required, he may allow the debit to you. So therefore the law is balanced. But the question which comes here is from which provision this law is coming. So therefore we need to go back and please refer VKC footsteps, read it threadbare. VKC footsteps have given the ultimate power to the GST Council. If anything is recommended by the GST Council, then it cannot be read down. It becomes a policy decision. And therefore, 38th GST Council meeting, if I'm not wrong, it was in December 2019. I'm not like, since I'm traveling, I'm on vacations, I'm not available with the records and everything. But that was in 2019 December or 38th GST Council meeting. When we read the agenda, there was one agenda which was there specifically for amendment of Section 49. Section 49 was to be amended in a way that there was subsection 4 which was supposed to be and proposed to be inserted. Now, the Law Review Committee has recommended that subsection 4 needs to be entered into or inserted for those ITCs which are fraudulently availed, so as to block those ITCs which are fraudulently availed. That was the intention. But finally, when the what I can say recommendation came from the council, they said that this will be the proviso which they will need to enter as a under subsection 4 of Section 49. Thereafter, when the agenda was cleared by the council, then the council has decided, when they recommended, wherein they have said that they will insert a rule 86 capital A, in spite of inserting subsection 4 or the proviso to subsection 4 of Section 49. So therefore, that was the proper discussion which is there in the council meetings. So now we cannot say that this law is invalid. This becomes a valid law. Under which circumstances it has to be implemented, that all depends on the implementation officers. If they are not implementing it properly, then we have the recourse available, like sub-rule 2 is there, otherwise the writs are there. This is number one. Number two, when it comes to the question that whether appeal can be filed or not. So therefore, in this, we need to appreciate and read the judgment of Radhakrishna Industries. Radhakrishna Industries, the Honorable Apex Court has said that if any call or any responsibility is given to the commissioner, go back to sub-rule 1 of 86A, जहां से आपने ये लिखा है, go back to sub-rule 1. It says the commissioner or any officer authorized by him, meaning thereby, these are the same words which are there in Section 83. A commissioner has to take a decision. He must have the reason to believe, or if he is authorizing such any officer, then also it will be presumed that the decision is of the commissioner. And therefore,
since the decision is of a commissioner and the order will be deemed to be an order issued by the commissioner, Radhakrishna Industries ratio will be applicable, which says that appeal is not to be filed. Appeal cannot be filed. That is one way of reading at it. And if we consider that the officer who is appointed by the commissioner is an independent officer and he can take the call, for example, deputy commissioner, and deputy commissioner passes an order, in that case of Rule 86 capital A, in that case, I'm of the view that the appeal can be filed because appeal section 107 is very clear. Any order, any communication of which I am aggrieved, I can go and file an appeal. So the appeal is not questionable. But I'll go with the first view, which is there in the Radhakrishna Industries, which is corrected and upheld by the Honorable Apex Court, saying that अगर आप याद करेंगे तो राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज में the joint commissioner has passed the order for provisional attachment. First question was whether the power can be delegated. The answer is yes, the power can be delegated. Second question was that if the power can be delegated, is it not an appealable order because it is passed by the joint commissioner? The answer was no, because the court said, the Honorable Apex Court said, the law reads commissioner if he has the reasons to believe in section 83. In Rule 86 capital A, there is a difference. It says commissioner or the officer authorized by him. So commissioner can delegate, which is written in the rule itself, which was not there in section 83. So even if the order is passed by the order of provisional attachment was there in that case by joint commissioner, it was an appealable order. But the Supreme Court said, no, we'll presume that it is an order passed by the commissioner because the joint commissioner has stepped into his shoes and therefore it is not an appealable order. So I am of the view when it comes to appeal, if Rule 86 capital A order is passed by the deputy commissioner or maybe the superintendent or somebody else, then in that case it is an appealable order. But when we read Samay Alloys or any other judgment which has dealt with that particular issue, that has clearly laid down a ratio following Radhakrishna Industry and other judgment, which says that if the commissioner must have the reason to believe, then in that case the order will be presumed to be issued by the commissioner and therefore it cannot be appealed against. Section 107 is not applicable for the orders which are passed by the commissioner. That is number two, my view. But again, I'll take a casual view, saying that at both the instances, if the order of attachment or blocking is done by the commissioner, then in that case it becomes a non-appealable order. But if it is not done by the commissioner or somebody else, then it becomes an appealable order. But the writs are maintainable because the question of law is there. Now let us move to the third query. The third query which you raised was, can it be considered to be a recovery? The answer is no. It cannot be considered to be a recovery. Reason being, it is merely for the purpose of protection of the further leakage or protection of the ITC which has already been fraudulently availed. It need not be utilized or it cannot be utilized. That is the only intention of this rule. मैंने एक फ्रॉड करके या एक बोगस इनवॉइस से क्रेडिट ले लिया एंड दैट क्रेडिट इज लाइंग इन माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. सो जब मैं उसको यूज कर सकता हूँ या फिर जब तक वो मेरे पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है, टिल दैट इट कैन बी, इफ इट इज अटैच्ड एज पर रूल 86 कैपिटल ए, then it will not be able to be used. It will not be percolated further. That is the intention of the law. Certainly, there are instances wherein the credit was taken. For example, the allegation is there. Whatever instances you have said, business था, COVID में बंद हो गया, and all about that those are Avinash, you're not audible anymore. He got disconnected. Okay. I'm sorry, there is a network issue. Yes. Am I audible now? Yes. So I'll conclude by saying this, that so far as recovery is concerned, the answer is no. It is not a recovery mechanism, and therefore Samay alloys, and there are a number of judgments. Only the issue is there are contradictory views. I'll discuss that also if the time will permit, but I'll not at this point in time. The issue is that if there is a credit which is available, then only that credit can be blocked.
So if I've availed 1 crore rupees, let's say as a credit, and I have a credit balance of 1 lakh rupees only, then they cannot come forward and attach 1 crore rupees because the balance is only 1 lakh rupees. So if they attach 1 crore rupees, that means they are entering into a recovery mechanism. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 करोड़ रुपए का मैंने 2018 में कोई परचेज लिया जिसके ऊपर आपका एलिगेशन है दैट इज अ बोगस परचेज बिकॉज योर सप्लायर डज नॉट एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम। नाउ इन 2025 और 2024 यू टेक एन एक्शन अंडर रूल 86 कैपिटल ए। उस वक्त मेरा बैलेंस केवल 1 लाख रुपए है and you are saying that it is negatively blocked till the extent of 99 lakh rupees, meaning thereby 1 crore rupees is the block, 1 lakh ka balance hai which is blocked, and then minus 99 lakhs. It means that all future purchases which are from the genuine suppliers is also getting blocked, and therefore it becomes a recovery mechanism. That is what is dealt with. This question is dealt with in Samay alloys, and it has been like taken forward and followed in many other judgments, including Delhi High Court very recently. So that is my view. प्रमोद जी आगे थोड़ा शिफ्ट कर दो। अच्छा, इसमें देयर इज वन मोर पॉइंट in the rule itself. There says that reason to believe should be in writing, right? So like as a taxpayer, do we have any right कि हम वो reason to believe देख सके, या अगर हमारी कोई further आगे proceedings होती हैं तो वहाँ पे ये हम ascertain करा सके कि there was actually reason to believe? And why am I asking it? Because the use of 86A is not just only in case of the NGTPs or in the case of the fraudulent cases or the bogus billing cases, but in many cases they just cancel the registration of one person, that too retrospectively, just because they were unable to contact with that person, like the simple reason like that. Because as I told you earlier कि जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसको कोई बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, सो फॉर सम ऑफ द डिपार्टमेंट पीपल तो कोई कॉल नहीं उठाया तो वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वो रीजन टू बिलीव का एग्जिस्ट होना, उसको एज अ टैक्स पेयर व्हाट कैन बी सेफगार्ड फॉर अस? आशु जी, आशु भाई आप म्यूट है आशु जी। शेफाली, इसमें इवन द कोर्ट हैज गॉन फर्दर। आई थिंक K9 का जजमेंट है ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, जी where not only the reason to believe, but the principle of natural justice will always be applicable. Though it may not be given in the rule itself, but what the court has held at many occasions, before blocking, an opportunity to the assessee should be given why the ITC should not be blocked. So there are two things. One, as far as the reason to believe, it should be in writing. Obviously, whether the assessee can demand it or not. Obviously, when the proceedings go on, the assessee, the courts can ask for the things, whether there were reason to believe or not, and the courts are asking for that, because what's happening in many of the cases, like the visit has been done by one division or one entity, or one by the central division or anti-division body. They have right to the jurisdictional body, and on the basis of letter, they have just blocked the credit. So what the court has held, the officer who is blocking the credit has to write the reason, and he has to apply his mind why he is blocking the credit. And when he has to write it, obviously when we are filing the rate or we are into the process of adjudication, it is a part of the proceedings, and we can always ask what was the reason to believe on which the basis of which the ITC was blocked. But the courts has gone further. They're asking not only you have to write in, you have to record the reason, you have to call the assessee also and to give the opportunity why the ITC should not be blocked. So I think it is a very much right of the assessee to go to know the reason why the ITC has been blocked. अविनाश जी, मतलब क्या एसएससी का भी ऐसा कोई राइट बनता है कि आप मुझे भी बताओ कि आपने क्या रीजन रिकॉर्ड किया है? As per my limited understanding, it is not about a question of the right. It's a question about the provision in law. When we say reason to believe, then we also, again, I'll say, please refer Radhakrishna Industries. Because Radhakrishna Industries में बहुत specifically बोला है, एक weightage दिया है, even Gujarat High Court में Velarius Industries, which speaks about the subjective satisfaction. When an officer takes an action, howsoever the action is
it is deemed to be a harsh action. It is a draconian provision when you are attaching a bank account or blocking the credit ledger. So therefore, there has to be a subjective satisfaction note. And that subjective satisfaction note is nothing but the reason or the grounds on the basis of which you believe that the blocking is necessary. So therefore, K9 by Karnataka High Court, it went up to the apex court, and on 15th of May 2025, the matter was dismissed by the Supreme Court, saying that nothing doing, the principles of natural justice and the reasons have to be recorded and to be provided well in advance, so that when I'm taking the benefit which is provided to me under sub-rule 2 of Rule 86 capital A, I must know that on what basis the allegations are placed and put forth, and on what basis the action has been taken. So I am of the view that it is written in law itself. Reason of belief is something which is not required to be safeguarded, as in section 67. 67 may it is a search action, and therefore there are a lot of evidences which are being gathered by the officers which are secret. So therefore they need not disclose that. But when it comes to provisional attachment, or when it comes to the blocking of credit ledger, it has to be a subjective satisfaction note which must be given to the taxpayer, saying that this is the basis, on the basis of we are taking a view that the attachment is required. So that is something which is now settled. And Radhakrishna is very clear about that, and that I will say that ratio will be applicable squarely in Rule 86 capital A, because it is nothing but the provisional attachment of your credit ledger. सो टिल नाउ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे डिस्कशन से निकल के आई हैं. द फर्स्ट इज कि रूल 49 में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था काउंसिल के द्वारा, उसने नहीं भी किया, बट दे डायरेक्टली डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू द रूल. सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड मैकेनिज्म टू मेक इट मैंडेटरी, और उसका मतलब वो भी एक सही मैकेनिज्म है. वी कैन नॉट चैलेंज इट, तो वो क्वेश्चन अभी हमारा खत्म हो जाता है. सेकंड था कि अपीलेबल है कि नहीं ऑर्डर, और उसमें अविनाश जी ने एक्सप्लेन किया जो राधा कृष्णा का जो रेशियो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि पासिंग अथॉरिटी कौन उस पर डिपेंड करेगा, एंड व्हेन दे विल डीम टू बी एंटर इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन. लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है बस रूल की और सेक्शन 83 की, वो हमने यहाँ पे कवर किया. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया आप लोगों को कि जो नोटेबल है, मैं आपको इसीलिए बार बार समराइज करके बोलती हूँ कि आप उसको फिर नोट करके रख सके कि पूरी वेबिनार में से आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि रीजन टू बिलीव लिखा तो है यहाँ पे, बट बाय रीजन टू बिलीव इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लिखना नहीं होगा, किसी को बताना नहीं होगा सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के बारे में, देन आई विल डू एनीथिंग, राइट. बट वो एक सेफगार्ड का काम करता है व्हेन यू हैव टू इलेबोरेट समथिंग, व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग. और जो पीएनजी हमारा काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो पूरा इसी कंसेप्ट पे है कि चाहे नोटिस है चाहे ऑर्डर है, और यहाँ पे कोई नोटिस ऑर्डर नहीं है, डायरेक्ट एक्शन है आपके अगेंस्ट. तो जो नोटिस एंड ऑर्डर के टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है कि देयर शुड बी अ कंप्लीट रीजनिंग एंड आई शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ इट. तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि नॉट जस्ट बीइंग इन राइटिंग, बट ये टैक्स पेयर को प्रोवाइड भी किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट लेजर. इन सारे इश्यूज के बाद जो गाइडलाइन सीबीआईसी ने इशू की, अभी हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे, और उसी के बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वी विल जस्ट कीप डिस्कसिंग इट लाइक दैट. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि इसके इनिशियल फेज में काफी मिसयूज हुआ इस पर्टिकुलर प्रोविजन का. अभी इसके मिसयूज से और बहुत सारे जो इश्यूज आ जाते हैं. एक तो ये कि जैसे मैं आईटीसी लेजर ब्लॉक हो गया, और लेजर ब्लॉक हो सकता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट भी हुई हो. कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई इंक्वायरी है, तो उसकी टाइम पे ही आपकी जो लेजर है वो ब्लॉक हो जाती है. नाउ द थिंग इज कि मान लीजिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में, एंड इफ आई वांट टू गो टू द अपील, तो मेरा भी लेजर ब्लॉक्ड है, तो मैं प्री डिपॉजिट किस तरीके से करूं, मेरे को रिटर्न्स फाइल करनी है. बीच में डिपार्टमेंट ने क्या किया, निगेटिव ब्लॉकिंग भी स्टार्ट कर दी. एंड निगेटिव ब्लॉकिंग का मतलब यही था कि आपके लेजर में है ही 1 लाख रुपए, उन्होंने 5 लाख का ब्लॉक कर दिया. तो भी आप 3B भर के उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखोगे तो सही, बट आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे, क्योंकि वो जितना आप अमाउंट लिखोगे उतना ही वो पहले नेगेटिव बैलेंस को ठीक करने में, उसको एडजस्ट करने में यूज हो जाएगा. तो इसकी वजह से द कंप्लायंस इशू पीपल वर फेसिंग नेगेटिव ब्लॉकिंग की वजह से, नॉर्मल ब्लॉकिंग की वजह से भी. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिर पार्ट यहाँ पे निकल के आया कि अगर मैं प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है मेरी, तो क्या अविनाश जी अगर 1 ईयर स्टार्ट होने से पहले ही मेरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कैन आई टेक द ग्राउंड कि अब मेरे को कुछ प्री डिपॉजिट पे करना है, या मैं चाहती भी हूँ कि अगर आपने कोई मान लो ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है,
तो मैं तो पे करना चाहती हूँ, बट हाउ आई विल बी एबल टू पे जब मेरा लेजर ही ब्लॉक दे तो? कि वहां पे मैं कह सकती हूँ कि नहीं अब तो सर, उसको मैन्युअली ओपन करो आप। certainly कर सकते हैं. Certainly you can take a recourse. You can make an application and representation to the officers, saying that now the proceedings are over, and therefore we need to file an appeal. Recently Delhi High Court से अभी हम लोगों ने एक order लिया है, but Yes. the issue is the department authorities will not take that action. Even if you make a representation, they will not say, or they will not allow you to use that. So finally the आपके पास जो alternate बचता है, that is writ of mandamus. You will have to go to the court, get a writ of mandamus in your favor, and direction to the tax officers that since now the proceedings are over and there is an electronic credit ledger balance which is already there, and now the matter is disputed, so he may be allowed to use that as a pre-deposit. तो इशू यही है कि आप कर सकते हैं, बट द ऑफिसर विल नॉट परमिट इट. बट दैट्स अगेन ए प्रॉब्लम, बिकॉज अगर मेरा ऑर्डर हो गया है और मान लीजिए सेम ही अमाउंट का ऑर्डर किया, सेम ही मेरा आपने आईटी से ब्लॉक भी कर रखा है, तो आई वांट टू पे इट, बट अब मैं पेमेंट कैसे करूं क्योंकि मेरा लेजर भी ब्लॉक्ड है और मेरी ऑर्डर की भी डिमांड खड़ी है. सो आई बिलीव सीबीआईसी की साइड से यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि जैसे ही आपकी डिमांड फाइनलाइज हो जाती है तो फिर आपका आईटीसी लेजर ऑटोमेटिकली ओपन होना चाहिए, क्योंकि एक अमाउंट के लिए आपने ब्लॉक भी कर लिया और एक ही अमाउंट के लिए आपने एक ऑर्डर भी पास कर दिया, तो मेरे पास तो पे करने का फिर कोई इसमें जरिया ही नहीं बचेगा. सो लेट्स गो टू द गाइडलाइंस. इन्हीं सारे मिसयूजेस की वजह से खुद सीबीआईसी ने ही गाइडलाइंस यूज किए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड दैट, मैं इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिर्फ उसी को हम लोग वॉक थ्रू करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे उसको क्योंकि डिस्कशन हम लोग ज्यादा रखेंगे इसमें. सो दे सेड दैट इन पैरा 3.1.4, उसके पहले छोटी मोटी कुछ चीजें थी मैंने इसमें कवर नहीं की है वो. The electronic credit ledger must not be exercised in a mechanical manner, but the problem is it is actually being used in mechanical manner. तो कहीं पे तो रिटर्न के डिफरेंसेस भी होते हैं, दो रिटर्न के डिफरेंसेस भी हो तो भी वो लेजर ब्लॉक कर देते हैं, राइट. तो वो सीबीआईसी ने भी इस चीज का संज्ञान लिया, खुद ही उन्होंने सेल्फ एक्नॉलेज किया एंड दे सेड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन अ मैकेनिकल मैनर एंड अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स ऑफ this of the case is important to determine case fit for exercising power under rule 86A. The remedy of disallowing debit of amount from electronic credit ledger being by its very nature extraordinary. I think this is very important word to note down. They themselves understand it, that it is not a power you are going to exercise in each and every case. It is extraordinary. तो जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस होगा, यहाँ पे भी बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी एप्रीहेंशन ऑफ रिवेन्यू लीकेज. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सारी कंडीशंस ठीक है, आपने रूल 86 के अंदर जो कंडीशन दिया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है फ्रॉडेंट है, वो सब ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड आल्सो बी एन एप्रीहेंशन ऑफ रिवेन्यू लीकेज. दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए. आशु जी, अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक है या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एप्रीहेंशन होने की जरूरत नहीं है एंड इफ कंडीशंस आर फुलफिलिंग 86 ए रूल की तो वो डायरेक्टली बस ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई रिवेन्यू लीकेज की उसमें जरूरत हो? what I feel कि अगर ITC why this is blocked, there is a apprehension or there is a doubt, there is a reason कि ITC has been taken fraudulently or within a specific criteria. If ITC has been taken fraudulently, that is a part of revenue leakage. Because if ITC was not available to me as per the law and I have taken it, that is a revenue leakage itself. Because ITC is equivalent to cash from the government point of view or from the assessee point of view. So fraudulent utilization of the ITC or availment of the ICG itself is a revenue leakage. नहीं, बट फ्रॉडलेंट के अलावा और भी तो पॉइंट्स कवर कर रखे ना. फ्रॉडलेंट इज वन The ऑफ voice is देम. not coming. वन सेकंड, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है फिर मुझे? हाँ. सो आई एम सेइंग कि जो 86 ए के अंदर फ्रॉडलेंट Not इज वन audible. पॉइंट. नहीं, आपके ही नेट में कोई प्रॉब्लम है फिर. Here it is okay here. ओके, आ रही है. कोई नहीं, चलिए मैं अभी फिर आशु जी की साइड अभी थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ इसको. अभी अविनाश जी के पास जाती हूँ. सो क्या एप्रीहेंशन ऑफ रिवेन्यू लीकेज भी होना चाहिए, बोथ ऑफ द थिंग्स एट द सेम टाइम? अच्छा, 86 ए के फिर दो पार्ट हो गए, एक तो फ्रॉडलेंट है और उसके बाद उन्होंने अदर कंडीशंस भी दी हैं व्हिच मे और मे नॉट बी फॉर द फ्रॉडलेंट रीजन. सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड. Yeah, Avinash, please. नहीं, यू प्लीज प्रोसीड. आपको आवाज आ गई ना? अभी आ गई? आशु भाई, यू टेक अप. आप म्यूट पे हैं आप.
अविनाश भाई, यू प्लीज टेक अप, यहाँ पे मेरे को आवाज नहीं आ रही थी इधर। ओके। देखिए मुझे लगता है फ्रॉडलेंट हो या एप्रीहेंशन हो, important is whether they can go out of the mandate that is given to them under Rule 86 capital A. And again, I will reiterate, the intention of lawmakers was to curb the usage of input tax credit, which is questionable. Hmm. And therefore, any input tax credit which is questionable only can be blocked. Simply a written difference or an 3B or 2A difference Hmm. will not entertain them or will not like enable them to take a harsh action of Right. Rule 86 capital A. And if at all they have to take it, they will have to record that in the subjective satisfaction note. Because courts are now very clear, unless the subjective satisfaction note is there for Rule 86 capital A or for Section 83, they are going to declare the entire attachment as a invalid attachment or an illegal attachment. So therefore, even if there is something which as per us is not a fraudulent credit, but they have the reason to believe that it is a fraudulent credit, they will have to record. They will record subjective satisfaction and they will give that copy to you. If they have not recorded, then obviously आपके पास favor है. If they have recorded, then you can counter that under sub rule 2 and you can represent your matter also. So principle of natural justice will be followed and you will get the relief. सो फॉर द लिसनर्स, अभी कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो अगर आपका ब्लॉक हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव द राइट कि आपको हियरिंग वहां पे दी जाएगी, वो उन्होंने खुद अपनी गाइडलाइंस में भी क्लियर कर रखा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि अब अगर अपील में जाने वाली बात है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, वो वहां पे मैटर करेगा, वो हमने ऑलरेडी कवर किया यहाँ पे। एंड अगर आपकी प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो गई है और आपके अगेंस्ट कोई फाइनलाइज हो गई है डिमांड, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फिर रिट का ही आपके पास चारा बचेगा, बट यू विल हैव टू गो टू द रिट, और वहां पे भी जाके फिर आप इवन बिफोर द टाइमिंग ऑफ 1 ईयर भी आप फिर रिट के थ्रू उसको ओपन करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल अपनी रिप्रेजेंटेशन में देखो जो पॉइंट्स आप लोग कवर कर सकते हैं ना, बिकॉज इन देयर गाइडलाइंस ऑल्सो जो जो उन्होंने चीजें बोली और जो अविनाश जी ने बोली, आशु जी ने बोली, वो सारी चीजें हम एक जगह पे ऑन द सेम प्लेस इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। रीजन टू बिलीव आपको देना उसके लिए मैंडेटरी है। देन एप्रीहेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज भी होना चाहिए, फ्रॉडलेंट भी होना चाहिए वो। देन मैंने बोला फ्रॉडलेंट में, लेकिन मैंडेटरी नहीं है क्योंकि फ्रॉडलेंट के साथ उन्होंने बाकी चीजें वहां पे कवर किया। बट अगर फ्रॉडलेंट नहीं है तो फिर रेवेन्यू लीकेज का एप्रीहेंशन डिपार्टमेंट की साइड होना चाहिए। देन मैकेनिकल मैनर में एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है, मतलब इन सम ऑफ द केसेस व्हाट आई हैव सीन के सप्लायर्स की तो लाइबिलिटी होती है, सप्लायर के साथ में किसी का अगर रिसिपिएंट भी उनका एनजीपीटी निकल गया, एनजीटीपी निकल गया, तो वो उसके लिए जो सेलर है उसका भी आईटीसी लेजर ब्लॉक कर देता है। सो ठीक है, सप्लायर तो चलो मेरा टैक्स उसने नहीं पे किया होगा, जो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आया, बट जिसको मैंने सेल किया है उसकी तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट वो जब चेन पिक करते हैं तो वो सभी को कर देते हैं। तो वी आर नॉट सपोज टू यूज इट इन अ मैकेनिकल मैनर। इन ईच एंड एवरी केस वो आपको फॉर्म करना पड़ेगा अपना ओपिनियन की यहाँ पे आपका फ्रॉडलेंट है या फिर एप्रीहेंशन ऑफ रेवेन्यू लीकेज है। नेक्स्ट, अब इसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? So the commissioner is the proper officer for the purpose of exercising power of disallowing the debit of amount from the electronic credit ledger of the, इसलिए हाँ एक मॉनेटरी लिमिट भी उन्होंने दी। नेक्स्ट पेज पूछिए। नेक्स्ट, सो कमिश्नर तो है ही, साथ में जो डीजीजीआई के हैं एडिशनल डायरेक्टर, दे कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द सेम पावर, मॉनेटरी लिमिट उस पर भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि ऑडिट के टाइम पे अगर ऑडिट में मेरा कुछ निकल रहा है तो जो ऑडिट अथॉरिटी है, ऑडिट कमिश्नरेट है, क्या उनको भी राइट है? तो इन्होंने वहां पे जो प्रॉपर ऑफिसर दिया है, तो दे सेड दैट वेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी का तो समझ में आता ही है। अंडर सेक्शन 65 और 66 इट इज नोटिस दैट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन फ्रॉडलेंटली अवेल्ड or is ineligible as per the grounds mentioned under sub rule of rule 86(4), which may require disallowing debit of the electronic credit ledger, the concerned commissioner, principal commissioner of GST audit commissionerate may refer the same to the jurisdiction CGST commissioner। तो वो खुद नहीं ब्लॉक कर सकते, लेकिन ऑडिट के टाइम पे भी अगर उनको लगता है कि कोई आपके पास टेंटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट आया और उसकी वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर ब्लॉक होना चाहिए, तो वो जो आपके जुरिस्डिक्शन कमिश्नर है उसको केस रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, manner of blocking, it should not be more than 1 year।
एंड इट शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट जो उनको टेंटेड थी. अब दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि लिखा तो है कि जितनी टेंटेड अमाउंट है सिर्फ उतना करना है, बट व्हाट आई हैव सीन प्रैक्टिकली कि वो सारा ही ब्लॉक करते हैं. उनका बस चले तो खैर वो और भी ज्यादा कर दें, लेकिन वो सारा ही ब्लॉक करते हैं. इन सम ऑफ द केसेस इफ यू विल से कि सर इस वाले इनवॉइस की जिसकी आप बात करें उसकी अमाउंट तो उतनी है, देन दे विल से कि नहीं हमारा हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, अभी किसी और का भी आ गया तो क्या होगा. सो जो अमाउंट है आपका वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता जिस पर्टिकुलर के लिए उन्होंने रीजन अपना रिकॉर्ड किया है, जिस पर्टिकुलर अमाउंट की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, या कोई एविडेंस अगर उनके पास कोई है तो. ओके. एंड अच्छा ये एक और चीज है, एक मिनट पीछे एक और जाइए, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है. कई बार क्या होता है लेजर ब्लॉक होता है और एसएससी को यही नहीं पता चल रहा होता कहाँ पे किया किसने किया, बट उनके खुद के गाइडलाइंस में उन्होंने लिखा है जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही शुड बी इन्फॉर्म on the portal to the concerned registered person along with the details of the officer who has disallowed such debit. तो डेबिट जिसने किया ऑफिसर ने उसकी डिटेल और आपका इट इसलिए एक्चुअली ब्लॉक हो गया है, दोनों ही चीजें आपको पोर्टल पे इन्फॉर्म करना भी मैंडेटरी है. आगे नेक्स्ट. So now there are some of the judgments. ठीक है, सिर्फ क्रक्स उनका जो है वही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. बेस्ट कॉल का दरवाजा जजमेंट, सिर्फ जो डार्क लाइन है दैट पोर्शन वी विल बी रीडिंग. द ब्लॉक cannot exceed the amount of ITC believed to be wrongly availed and is not a provision of recovery but a temporary safeguard. तो बहुत आई थिंक जो अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो अविनाश जी तब से बोल रहे थे, आशु जी तब से बोल रहे थे, वही चीज बिल्कुल जजमेंट में उन्होंने साफ साफ लिखी हुई है कि आपकी जो आईटीसी रॉन्गली आपका जो अवेलेबल बिलीव किया जा रहा है उससे ज्यादा आपका ब्लॉक नहीं कर सकते. फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज कि ये कोई रिकवरी नहीं है, इट इज जस्ट अ टेम्पररी सेफगार्ड. नेक्स्ट. Valerius Industries, गुजरात हाई कोर्ट. इट कैन बी इन्वोक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपका इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो हो सकता है, उसके लिए कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने की वैसे भी जरूरत नहीं है. देन हियरिंग इज मैंडेटरी बिफोर पासिंग द ऑर्डर टू ब्लॉक अंडर रूल 86 से. एक्चुअली पहले शुरू में ये होता था कि वो लोग सीधा ब्लॉक कर देते थे, बट लेटर ऑन कोर्ट ने भी कहा और वो गाइडलाइंस में मिस हो गया वो पॉइंट, बट गाइडलाइंस में भी दे हैव इनकॉर्पोरेटेड कि आपको हियरिंग वहां पे दी जानी चाहिए बिफोर ब्लॉकिंग द आईटीसी लेजर. नेक्स्ट. Rule 86A impugned order did not contain independent or cognate reason to believe as to why it was necessary to block electronic credit ledger. It will be set aside. तो यहाँ पे मैंने जो आपको पूछा भी था कि रीजन टू बिलीव का क्या मेरे को राइट है और क्या मुझे इस बात का कभी फायदा भी मिल सकता है कि रीजन टू बिलीव सही नहीं था या नहीं था उनके पास में, क्योंकि लिखित में होने का तो यही फायदा है मेरे पास हर चीज का कि आप अगर रिटर्न में एक्सप्लेन कर रहे हो तो कल को फ्यूचर में आपका जो आर्बिट्रेरीनेस में चेक कर सकूं. तो यहाँ पे अगर कोई आर्बिट्रेरी है और रीजन टू बिलीव आपका वैलिड नहीं था तो उसकी वजह से भी आपकी जो प्रोसीडिंग थी वो सेट असाइड होगी, वो ड्रॉप होगी. नेक्स्ट. एक लास्ट भी है. इट वाज जस्ट एसएलपी वाज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये भी 86 का ही जो ब्लॉकेज थे उसको क्वॉश करने के लिए था. तो इसके साथ में देयर वर सम ऑफ द जजमेंट एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टेकन फ्रॉम अविनाश जी एंड आशु जी. अविनाश जी आपने भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट बताया था जो हमने रिसेंटली किया है, आप उसके बारे में ब्रीफ करोगे थोड़ा एक बार? नहीं, बट मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा जरूरी है वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट विच इज गोइंग ऑन. When you are saying that the recovery cannot, this cannot be considered as recovery, you also need to appreciate that the department is taking an action wherein they are doing negative blocking. See, 86A की वैलिडिटी पे, 86A में सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन पे आपको कोई डाउट नहीं है, इट इज सेटल्ड. एंड आफ्टर राधा कृष्णा इट इज वेल सेटल्ड लॉ. बट द dispute which is still sustaining is, or which is like still there is the different views which are taken by different courts when it comes to negative blocking. For example, Samay alloys, which was mentioned by Ashok Bhai. The Samay alloys, the Honorable Gujarat High Court has taken a call that negative blocking is impermissible. Whatever is the balance which is available, because the word used in 86A is available balance. Right. Unless the balance is available, you cannot block it. Merely because आपका 2017 में परचेज था, उस पर 1 करोड़ की क्रेडिट थी, आज की डेट में आप मेरा 1 करोड़ ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि जो मेरी फ्यूचर परचेजेस हैं, जेन्युइन परचेजेस, आप उसकी क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हो. तो दैट विल टेंट अमाउंट टू अ रिकवरी प्रोसीडिंग्स which is impermissible, which was said by Samay Alloys. But then came a judgment of Allahabad High Court, RM Dairy. RM Dairy, the Allahabad High Court has said nothing doing negative blocking is permissible.
Then thereafter judgment was there of Calcutta High Court. The Calcutta High Court judgment was a Basanta Kumar Shaw. In Basanta Kumar Shaw also, the Samay alloys and RM dairy both were discussed. And Calcutta High Court also said that negative blocking is permissible. They said it is permissible. Then the matter went to the apex court, Basanta Kumar Shaw. And then the apex court has not dealt with the matter and they have dismissed in limine. Because Basanta Kumar Shaw में उसने alternate remedy ले लिया था. उसका adjudication हो गया था and therefore the matter was not, or it was almost infructuous. So therefore the Supreme Court has said कि नहीं, nothing doing. Means the adjudication has been done. So we will not take up this issue now. So that was one. And thereafter, Samay alloys were followed by Delhi High Court in Best Cop. Best copy, yes, same decision. Best Cop, it was followed. Then K9 was on a different footing. That was not for negative blocking. That was for principle of natural justice and the reasons of belief. I know very closely because a senior advocate Veer Aguruman sir has argued that. And in apex court, it was recently listed. Even he shared the order to me. That was listed on 15th of May 2025. And it was dismissed, as you rightly mentioned. It was dismissed by the apex court, saying that nothing doing. K9 is a good law. We are not going to interfere in that law. Now, recently, a judgment has came from Madras High Court. They have referred every particular judgment, which we have discussed. Samay alloys, RM dairy products, then this Shaw judgment, then thereafter the judgment of Delhi High Court. And still, they have said that negative blocking is permissible. Madras High Court. It's a single bench judgment of Skant Guru Innovations Private Limited. It's a recent judgment of October 2024. So this is an issue which is still to be settled. Although Bombay High Court has not given any view on this, we are arguing before the Bombay High Court. Bombay High Court has not given any view till date. It is pending. But because of this contradictory views, and we all are aware that in writ, when there are contradictory views, specifically in relation to a question of law, it is not settled. It does not get settled unless it is decided by the apex court. So let us see. Samay alloys as per us is settled. यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? समय alloys में अगर स्टेट ने किया होगा तो दे विल से इट वाज अ एक्शन बाय द स्टेट अथॉरिटीज, सेंटर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, which is absolutely bad in law because this is a question of law finally. So let us see what will happen in future. But this is something which we need to keep in mind. There are courts which have taken a negative view that the negative blocking is permissible. There are courts like Gujarat High Court and Delhi High Court which have taken a clear view that negative blocking is not permissible. So आप कहाँ पे located है? Accordingly, we need to take a call. Recently, Bombay High Court has stayed the proceedings when there is a negative blocking, but still the judgment is awaited. We have not argued. We are still to argue that particular issue. Now, when it comes to what you have asked me to share, the recent judgment of Delhi High Court that we have argued, that was qua that particular issue that when you have said na, ki the adjudication is over. And now there is a balance lying, and we want that to be used for making the pre-deposit. That has been allowed in case of Roos Education very recently, I think on 14th of May 2025 by the Delhi High Court, wherein Delhi High Court is very clear and Justice Singh was very clear that ये पैसा अगर आपके पास पड़ा है और adjudication हो चुका है, and when there is a provision in law that you will have to pay 10%, the rest of the 90% recovery will be stayed, then nothing doing will be permitting you to use that. So that is the recent judgment that we have argued, we have encountered it. But in 86 capital A, the only issue which is yet to be decided and which is yet to be settled by the apex court, and it will certainly reach to the apex court one day or the other, wherein we'll have to wait and watch that whether negative blocking is permissible or not. Because GST Council meeting, if you read that, they have clearly said available balance can be blocked. At the same time, Gujarat High Court has said that only available balance can be blocked. And when we read the rule 86A, the word used available is there. That rule for making the use of available balance in electronic credit ledger. But other high courts like RM Dairy or Basanta Kumar Shaw,
that is Calcutta High Court or Kerala High Court, they have followed a principle wherein they are saying if there is a tainted receipts or fraudulent credit, then in that case, for 1 year as a protective attachment, that can be attached, irrespective of the fact that it is negatively being blocked. आपके पास बैलेंस नहीं है फिर भी आप अटैच कर सकते हो. So these are the contradictory views. Just I wanted to share that. Okay. So pointers which we were noting. Now we can also note down about the negative balance और इसमें जो judgments अविनाश जी ने बताया वो आप लोगों ने notice कर लिए होंगे because 2-3 बार उन्होंने repeat भी किए हैं. So this is one of the important thing. And another जो favorable judgment फिर अभी है भी दिल्ली हाई कोर्ट का खुद उन्होंने ही argue किया है. Where they said कि आपका अगर proceeding start हो गया, आपका order आ गया और आपको pre deposit के लिए you need the same amount, तो वहाँ पे आपको उसका relief जो है मिलना चाहिए. But again अभी department level पे फिर भी वो मुश्किल है आपको अगर ऐसा कोई situation create होता है you will have to go to a writ. So after this, there are some of the questions. Emoji questions ले सकते हैं? Yeah. I think one question is from Mr. Ajay. Can order be issued by an officer below the rank of an assistant commissioner? Will the order by the AC be appealable? Second one you already discussed, but can the order be issued by an officer below the rank of an assistant commissioner? Anshuji? आशुष जी आप लोगे से वैसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ है बट स्टिल आप अगर उसको समराइज करना चाहते हैं I think rule are very clear. The it can be by the commissioner or not below the rank of the assistant commissioner. So below the rank of assistant commissioner, the 86A cannot be passed. What is my understanding? Appealable. I think there are divergent view for that. Like Avinash ji told, if it is by AC, it can be appealable, or by the commissioner, it is not appealable. But in one of the judgments recently, Bombay High Court has held, they have specifically discussed that order under 86A is not appealable under section 107. So there are divergent view for that purpose. It is available or not appealable. But one way is very clear. If it is by the commissioner, it is not appealable. बता दीजिए. I just tell it is Bombay High Court judgment. Guys, please note this down. Just a minute. Gujarat. It is DV Projects Limited. No, not DV. Just a minute. It is some other. Yes, it's a DV Projects Limited. In this, the court has specifically discussed the maintainability of the writ, by whether the writ is maintainable or not. In this, the court has discussed, because this is not appealable order under 107, so writ is maintainable. So court has discussed that point of view. Okay. Okay, the next question is, in one of the client case, ITC is blocked by the officer by saying the supplier of goods is not traceable and is not available at the principal place of business. And then client was asked to pay through DRC 03 because of the non-existence of supplier. Is it a valid action by the proper officer? How can the buyer know the genuineness of the supplier? Is there any remedy for the same? Avinash ji, would you like to put some points on it? Yeah, this is a long drawn litigation which is going on since 2017-18. So I'll not be interested into dealing with this particular question, but in very short I'll answer that certainly you are responsible for your suppliers in GST law. Maybe not any other law, but in GST law, if you are availing the credit, you are taking a benefit, then in that case, it is your duty and responsibility to comply with the law. And the law says that your supplier must be a genuine supplier, which must have paid the entire tax liability, either from his cash ledger or from the genuine purchases, that is genuine ITC. So therefore, if the department is saying that your supplier is non-existent, it becomes our responsibility to make sure and prove that the day when we have purchased the goods, he was existent. So you just prove that nothing beyond it is required. आज की डेट में वो है या नहीं है, that doesn't matter. जब आपने purchase किया था उस समय उसका होना mandatory था. If you are able to do that, then certainly
सब रूल 2 का बेनिफिट आप लीजिए, मेक योर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द ऑफिसर. They will have to give a personal hearing opportunity. K9 and multiple judgments are there. And after giving that personal hearing opportunity, they will adjudicate. If you are able to substantiate, you will get a relief. If you are not able to substantiate, go and file an appeal or file a writ. सो केदारनाथ जी, इसमें एज अविनाश जी सेड कि आपने जो सेकंड पार्ट इसमें बोला है दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लायर, तो रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अगर वो डीआरसी 3 से भी पे करने के लिए बोल रहे हैं, सो इट्स अ डिसीजन कि आप इसको लिटिगेट करना चाहते हैं आगे. डीआरसी 3 से तो फिर पे करने का आपका कोई सेंस नहीं बनेगा, लेजर आपका ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है. बट आपकी जब एडजुडिकेशन स्टार्ट होगी, तो अभी तो उन्होंने आपको शायद बहुत ज्यादा कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया होगा, बट एडजुडिकेशन स्टार्ट होने के बाद नोटिस आपको जो प्रॉपर्ली वो ड्राफ्ट करके भेजेंगे, तो उसमें सब कुछ बताएंगे कि सप्लायर का कई बार कैंसिलेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट भी वो लोग लगाते हैं, राइट? तो या उसका कोई स्टेटमेंट वगैरह, तो वो सब आप जब सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, तब आपके लिए बेटर होगा डिफेंड करना विद ऑल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन. बट अभी के लिए देयर इज नो सेंस इन सेइंग टू डीआरसी. और जैसा विनायक ने बोला कि आपका कोई ब्लॉकेज है, उसके अगेंस्ट तो आप अभी रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं विद ऑल द एविडेंसेस, और जो भी आपके पास कुछ है प्रूव करने के लिए. एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आज है नहीं है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस वक्त आपने उससे परचेज की थी उस वक्त वो एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे. तो जब आपने परचेज किया था तब वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, और अब तो वो पता लगाने का आपके पास कोई तरीका भी नहीं है. लेकिन अगर उन्होंने रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल कर रखी हैं, वो आपके पास एक तरीका हो सकता है. 3 साल पहले तो कोई जाके देख नहीं सकता कि वहां पे वो बिजनेस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे. सो और कोई क्वेश्चन है? No, that's all. Don't have any. सो एज अ फाइनल वर्ड, आशु जी आपको कुछ बोलना है अभी? Now, I think we have discussed all the things. If we summarize, when we are our ITC is blocked by Rule 86A, the action point we can discuss what has to be done. We should not rush to the writ immediately, because few of the writs has been dismissed because of this reason only. My ITC has been blocked and we are rushing to the filing of writ. Because if we see the guideline, the officer has been empowered to listen to the assessee. So first we should write to the department why that it has been blocked, give me the reason, and unblock it. Then we should take any action after that. As far as the negative blocking concerned, different divergent views are possible. Avinash has discussed that thing. So in which state we are, accordingly we should take a call. If we are in Delhi and Gujarat, high courts have taken different position. If we are in West Bengal or we are in UP, the courts have taken different position. So we should be very clear where we are situated, and accordingly we should take call for the further action. That's the point we have to keep in mind. And the third point, it is very important. 86A is not giving the blanket power to the officers, because practically the officers threatens to block the ITC for each and every case. We should be aware it can be blocked in specific situations. Beyond those specific situations, ITC cannot be blocked. In every situation, like I have not paid the interest, my returns are delayed, or somewhat little discrepancies are there, then the ITC cannot be blocked. That is specific 4 conditions, or the fraudulent ITC. That is the only condition when the ITC can be blocked. So we have to keep in mind ITC blocking to be done only for specific things and specific conditions, not for all the purposes. Yes, Shafali, you can take. Avinash ji, final words from your side. No, I think everything has been covered by Ashu bhai in quite a detail, and we have already discussed. जो मेरा view था, I have already मैं तो blunt बोलता हूँ, तो I have already shared it. It's wonderful view from your side. And so guys, I think we are coming to an end to this beautiful discussion. And बहुत सारे important points थे जो अविनाश जी ने reiterate किए, आशु जी ने भी किए. Some of our rights and some of the things which may consider is our right, but actually it is not. So काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो उन्होंने क्लैरिफाई किए कि आपको जब अभी आपका ऐसा कोई केस होता है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर सीरीज ऑफ एक्शन, वो भी आशु जी ने समराइज किया इन द एंड. एंड जो क्वेश्चंस थे वो आपको सारे रिप्लाई किए. तो इसी के साथ में आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ आवर पैनलिस्ट. अविनाश जी, just one thing, I'm sorry, just one thing. देवेंद्र कटारिया जी का एक मैसेज था. He said कि in Raghav case the negative blocking decision was taken by the Delhi High Court. It went till the apex court.
or apex court has dismissed it, and he has shared that order also with me. So it's very simple, sir. It is dismissed in limine. The Supreme Court has not given any views on that. Yes. It simply says that we don't want to interfere in the decision of the High Court. That means till Supreme Court decides in any other matter against us, the order which is passed by Delhi High Court holds the water, and therefore it is a good law, a right law. Good. And आने वाले टाइम पे हम लोग एक सेमिनार इस पे भी अपना एक वेबिनार करने वाले हो. हमारे डिस्कस टॉपिक्स में था डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर पे भी कि कभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ रहा है, उनका कोई डिसीजन आ रहा है, मर्ज होके वो फाइनलाइज होगा और कब वो नहीं होगा. आई थिंक वो क्लैरिफिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज वन ऑफ दियर प्रपोज्ड टॉपिक फॉर द अपकमिंग वेबिनार्स. एंड here I would like to thank all of our panelists. अविनाश जी आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री है, इनफैक्ट ही इज ऑन द वेकेशन. फिर भी उन्होंने टाइम निकाला. मेरे को लगा कि आज वो काफी रिलैक्स्ड भी लग रहे थे बताने में. हमेशा थोड़े वो कोर्ट से आते थे तो टायर्ड और वैसे लगते थे, बट टुडे ही सीम्स टू बी वेरी रिलैक्स्ड. वो बड़े आराम से बता रहे हैं इसलिए. एंड आशु जी थैंक यू सो मच, एंड प्रमोद जी जिन्होंने हमें जो बेसिक प्रोविजंस थे उनको गो थ्रू कराया. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ आवर पैनलिस्ट, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू for joining this webinar, and we have our calendar for each and every month in advance for the proposed topics of each and every month. डे बिल्कुल फिक्स कर रखा है हम लोगों ने, हमेशा फ्राइडे ही होगा और 4 से 5 ही होगा. कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग वेरिएशन करते हैं. सो ये तो आप फिक्स ही समझ सकते हैं. एंड लिंक भी जनरली आपका सेम ही काम करेगा. तो 4 to 5 एवरी फ्राइडे टॉपिक्स जो है वो हम लोग एडवांस में सबको भेज देते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग होते हैं. So with this, I would like to thank you so much everyone, each and everyone for joining in here. And with this, I'm concluding this webinar. I think we have shared a link to share the review. So Okay. please do share your feedback and reviews. Okay guys, so जाने से पहले एक आपकी जो चैट बॉक्स है उसमें एक रिव्यू का लिंक भी है, तो वहां पे आप अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं. काफी अच्छा लगेगा हम लोगों को if you will give that. So now we can conclude. Pramod ji. Yes, thank you very much and good night. Thank you. Thank you so much everyone. Thank you, everyone. Thank you all.